Om Shanti. Sister Soraya, you are most welcome here at Vadodara family. You are with Vadodara family right now, okay? I am very happy to be with all of you. Thank you. So, Wonderful. भाई और बहनों, आज सिस्टर सोरोया जो है मस्कत से है, वो आज हमें अपना ईश्वरीय अनुभव सुनाने जा रहे हैं। और जैसे आपने पहले देख ही लिया, गायत्री बहन को आप सभी पहचानते हैं क्योंकि गायत्री बहन बहुत अच्छे से अपना अनुभव सुना के गए हैं पहले। तो गायत्री बहन आज विशेष फिर ट्रांसलेशन की सेवा हमें देंगे क्योंकि सिस्टर सोराया हिंदी नहीं जानते, हिंदी नहीं बोल पाएंगे, तो ट्रांसलेशन की सेवा गायत्री बहन से मिलेगी। उस बहाने हमें हमारी मीठी प्यारी गायत्री बहन से मिलने का मौका भी आज पुनः मिल रहा है, तो ये भी खुशी की बात है। और गायत्री बहन का वीडियो मैंने देखा यूट्यूब पे, तो काफी सारे व्यूज भी आए हैं और कमेंट्स भी बहुत अच्छे अच्छे। शायद गायत्री बहन ने देखा या नहीं मुझे नहीं पता है। गायत्री बहन देखा आपने, कमेंट्स वगैरह पढ़ा? बहुत दिन पहले देखा। अच्छा, तो व्यूज भी अच्छे आए हैं, लोगों ने कहने का भाव है बहुत पसंद किया है, तो आज पुनः मिलने का मौका भी बहुत अच्छा है। तो भले सिस्टर सोरोया, प्लीज यू मे स्टार्ट योर एक्सपीरियंस शेयरिंग। Okay, so I understand I have to introduce myself briefly and then speak a little bit about my journey too. Yeah, so actually the soul has traveled a lot on this earth. So I was born in France and then moved to Syria. And then finally I settled down in Oman. And I have been in Oman since 1982, so quite a long time. So, मैं अपने आप को पहले परिचय देना चाहती हूँ। वैसे मैं सीरिया से हूँ, फिर बाद में फ्रांस और फिर अभी मैं ओमान में सेटल हूँ। Yeah, and actually the spiritual journey didn't start in Oman. It started in Lebanon. And yes, I was already in Oman, but mid-time I went to Lebanon for 3 years. वैसे मेरा अलौकिक जन्म लेबनान से हुआ। वैसे मैं ओमान में ही रहती थी, लेकिन जब लेबनान जाना हुआ, वहाँ पर मैंने ज्ञान लिया। So although the journey started when the age of this body was mid-40 or a little bit more, late 40 actually, but I feel that the soul was awakened long before. वैसे मैं ये यात्रा लगभग अराउंड 40s में शुरू किया, लेकिन मुझे लगता है उससे पहले ही मुझे एहसास था करके। So of course, after taking knowledge, when I just went back into my memories of my childhood, when I was 10 years old, I remember loving to be in solitude. मैं जब ज्ञान के आने के बाद जब अपने बचपन को देख रही थी, उस समय 10 साल की थी, तब मुझे एकांत बहुत अच्छा लगता था। And so the soul didn't know at that time anything, but there was a kind of maybe glimpse of memory. And I used to go to a nearby forest by my own with riding my bicycle.
and going there, finding a special spot. It was always the same spot, and I used to lie on the soil and look up and search for the light passing through the branches of the tree. And I used to stay maybe more than 1 hour just looking at this light through the branches of the tree. पहले बचपन से ही मुझे एकांत बहुत अच्छा लगता था। उस समय मैं अकेले ऐसे ही अपने साइकिल लेके चली जाती थी फॉरेस्ट में। मैं अपने आप को देखती थी और फिर ऊपर ऐसे लाइट देखती थी। ऐसे बहुत समय रह जाती थी, घंटे तक भी, तो ऐसे देखते ही लाइट को रह जाती थी। उस समय ज्ञान नहीं रहता था, लेकिन ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगता था। Of course, it was a sun passing through the branches, but it was giving me a feeling of peace, a feeling, I don't know, but a deep feeling of belonging, only looking at the light. वैसे जंगल में वो पेड़ों के बीच में ही जा रही थी, वो लाइट देखने में आता था, लेकिन बहुत अच्छा लगता था उसको देखने में। Yeah, so another situation when I remember the soul was kind of remembering something. I was to introduce a music school events for parents. मैं ऐसे ही और कुछ बातें याद करती थी, तो फिर मैं स्कूल के बच्चों के लिए एक म्यूजिक इवेंट ऑर्गेनाइज करनी थी। So at that time I was maybe 11 years old, and I kept this introduction preciously. I don't know why, because I didn't keep anything else from that time, but I kept this small introduction with me. And no long ago, after taking knowledge, I was just putting order in my paper and I found it. उस समय मैं 11 साल की थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जब ज्ञान में आने के बाद ये सारी बातें सोचने लगी, तो फिर आत्मा सभी अपनी मेमोरीज को रिकॉल कर रही थी, ऐसा लगा। And when I read it, I was astonished of the content of the introduction of what I have written at that time. And I, of course, welcome the audience, and I tell them the music will take you to a new world, a colorful world, where you will find purity and divinity. So this was the content of the introduction. उस समय जो म्यूजिक प्रोग्राम के लिए इंट्रोडक्शन देना था, तो उसमें यही बताया मैंने कि म्यूजिक जो है हमको संतुष्टता लाती है, खुशी देती है, ऐसे। तो उस समय जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, मुझे ही बहुत आश्चर्य लगा। So, of course, at that time, I'm sure I was not understanding the meaning of purity and the meaning of divinity, but it seems it came as a glimpse in the memory of the soul. But the soul continued its journey. Everything was forgotten after that, and things or different events in life make me forget all of these memories. उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा था आत्मा अपनी सारी मेमोरीज को रिकॉल कर रही है करके। तो ऐसे बहुत सारे मेमोरीज मेरे अंदर आ रहा था, इमर्ज हो रहा था। Yeah.
And as I went far away from this being that I was slowly discovering when I was a young child, as I was going far away, I started to go more into the doing, and I left the being more and more. So जैसे ही बचपन चलता गया तो उस समय मैं उतना महसूस नहीं था, लेकिन मैं ऐसे ही करती गई, करने पर ज्यादा रहा लेकिन उसका अर्थ पता नहीं था. And of course, this created a void inside. And I didn't notice that until I actually grown and created a family. I had 2 beautiful daughters. And then I started to experience this void inside. And I was not knowing the reason why I was feeling this void. I had everything, whatever I need, I had it, but why this void inside? So अंदर वो आवाज था, लेकिन कभी मैंने उसको ध्यान नहीं दिया. तो जैसे ही आगे बढ़े, शादी हुआ, मेरे 2 बेटियां हैं, जीवन में सब कुछ रहा, लेकिन खालीपन लगा. क्या है वो अंदर का आवाज ऐसे, तो ऐसा लग रहा था. And so naturally to fill this void, I was doing more, being more active, doing many things, and I could not fill that void until I, yeah, please go ahead, Gayatri. उसको समझने के लिए मैंने ऐसा कोशिश तो नहीं किया, लेकिन वो अंदर अंदर ही बहुत चल रहा था, लेकिन समझ नहीं पाए वो आवाज क्या है करके. And one question I remember was always raising in my mind, what after? So you have done this, you have done that, you have created this, you have created that. And now what after? Where are you going? What is your aim? हमेशा ये प्रश्न रहता था कि बाद में क्या है, तो क्या करना है आगे चल के, तो क्या है मेरा जीवन, ऐसा प्रश्न हमेशा होता था, इसके बाद क्या होगा करके. Yeah. And I think at that time, recognized I became a little bit very much sensitive to whatever others says. I became more bitter and crying a lot and very emotional. So उस समय मैं बहुत सेंसिटिव हो गई थी. जो भी कोई कहते हैं तो फिर अंदर एक कड़वापन आता था या रो लेते थे. क्या है समझ में नहीं आता था. And for the first time, when I reached down the road, I turned my face to the Supreme and I said, you have to help me. एक बार ऐसे ही चल रही थी तो फिर घूम के देखते, फिर भगवान को कहा कि मुझे आपको सपोर्ट करना है. So explain to me what is happening inside me, why I am so bitter, why I'm not happy, what do I want, what is my aim, what is the meaning of life. So I ask so many questions. तो भगवान से फिर मैं बहुत सारे प्रश्न पूछने लगी. मैं क्यों इतना सेंसिटिव हूँ, क्यों इतना मैं कड़वा हो गई हूँ, क्यों मैं ऐसे बदल गई हूँ, मैं ऐसा क्यों रिएक्ट करती हूँ. तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न भगवान से पूछने लगी. So all of this in one night. I asked all my questions in one night. And I got the answer, not the second day, but maybe 2 or 3 days after. Baba put in my way 2 instruments to help me to find my way.
So, एक ही रात को ये सारा मेरे मन में प्रश्न चला था। ऐसा नहीं कि 2-3 दिन की बात है, एक ही रात को ये सारा प्रश्न मैंने किया था। फिर ऐसे 2-3 दिन के बाद बाबा ने एक निमित्त आत्मा द्वारा इन सारी बातों को उत्तर दिया। So the first instrument is a friend who told me, maybe you need to do some yoga, but of course she meant yoga exercise. So she showed me a center where they practice yoga. फर्स्ट उसमें से जो मेरा फ्रेंड रही, उन्होंने रास्ता बताया कि तुमको कुछ ऐसे योगा करना चाहिए। तो उस हिसाब से उन्होंने योगा सेंटर का ये भी इंट्रोड्यूस कराया कि तुम वहाँ जाके योगा करना चाहिए करके। So at that time I was in Lebanon actually for my 2 daughters to study in colleges. And I went to this center and I actually maybe 2 weeks or more, I practiced yoga exercise. But every day, every night when I was going back home, my body was more flexible, but my mind was not. उस समय मैं लेबनान में थी अपने 2 बेटियों के साथ। वो दोनों बेटियां कॉलेज में पढ़ते थे। उस समय जैसे मैं योगा सीखने के लिए जाती थी तो 2 हफ्ते कुछ हुआ। उसके बाद मुझे शारीरिक रीति से बहुत फ्लेक्सिबल अच्छा लगता था, लेकिन मन में ऐसे ही उलझन था। So I was going back home with the same mind, maybe a different body, more supple, but the mind was the same. But at this center, one day the one who was taking care of the center, he called me to invite me because he said, a meditator has come and please come and attend. तो उस योगा सेंटर में वहाँ जो सिखाते हैं उन्होंने कॉल किया और बताया कि वहाँ पर एक मेडिटेशन टीचर आने वाले सिखाने वाले हैं, आप आओ करके। And so, of course, the meditator who came was a teacher who taught me Raj Yoga, and the sister Anna from Lebanon. तो वहाँ पर जो मेडिटेशन टीचर आए हुए थे, वहाँ लेबनान के सेंटर से जो आना बहन रहते हैं वहाँ पे वो आए थे। And I noticed the peace on her face. I noticed that she was different from all others. I find something different. And then she said something, I don't remember whatever she said before, but one thing, till now, I can remember it. And what she said is, happiness is our birthright. So उस समय जैसे ही मैंने आना बहन को देखा, उनको देखते ही बिल्कुल अलग लगा और जैसे कि उनके अंदर वो शांति की महसूस हुई, खुशी की। तो फिर उन्होंने बहुत बातें कही, लेकिन एक बात मेरे को याद है कि वो खुशी की ऐसे। And for me, it was like a key has opened in the mind. And suddenly, like a wave of happiness has emerged, or like something like have lit inside the mind. So उस समय मुझे जैसे खुशी की लहर महसूस हुई, जैसे कि एक रोशनी जगी अंदर ऐसे। Yeah, because actually I was always told that you need to be angry if there is a bad situation, you need to be sad if there is a sad situation. And I was resisting that. I wanted to be always happy, but I felt this is wrong. I should be unhappy when there is bad situation.
So when she said happiness is our birthright, I say, yes, this is what I want to know. तो कहा गया था कि कोई गुस्से करते हैं उस सिचुएशन में गुस्सा करना, दुख के बातों में दुखी होना, तो ऐसे करते थे। लेकिन मुझे हमेशा ये होता था कि मुझे खुशी में रहना है हमेशा। तो उस हिसाब से मुझे लगा उन्होंने जो कहा कि खुशी जो है हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, तो इस बात को फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि हर परिस्थिति में खुश रहना है। So when the spark was created in the mind, my journey started. तो उस समय मेरे मन में एक रोशनी जैसे हुई, तो उस समय से मेरा ये यात्रा शुरू हुई। So for me, it was the first step toward truth. तो वो मेरा पहला कदम रहा। Yes, of course, after I needed to make effort. उसके बाद मुझे तो कोशिश तो करना है, पुरुषार्थ तो करना है, लेकिन वो मेरा पहला कदम। Yeah, so it took me some time to be really on the track and understand really the knowledge. And especially that after having taken knowledge in Lebanon, not really reading the Muli, but just understood the knowledge, I came back to Oman. वहाँ पर ज्ञान तो लिया मुरली ने ही, लेकिन उसके बाद मुझे ओमान आना हुआ। And I think at that time, Baba helped me a lot because I didn't go to the center from the very beginning, the center in Oman. Gayatri was not there at that time also. And it was actually I didn't ask for the number, I didn't ask for anything, but I was going every day on the beach and sitting and reflecting. And I don't know, it was a kind of meditation. उस समय मैं पहले सेंटर तो नहीं गई, उस समय गायत्री बहन तो नहीं, दूसरे रहे। मैंने जानने का भी कोशिश नहीं किया, लेकिन रोज मैं समुद्र के किनारे जाती थी, वहां पर बैठ के साइलेंस में रहती थी। लगता है वही उस समय मेडिटेशन करने का था। So again, Baba helped me again. And once I was at the beach and he gave me such a beautiful experience. I can call it soul conscious experience maybe, because I felt all the quality of the soul in maybe few minutes, but deeply. एक दिन जब ऐसे ही योग में रहे बीच पर, तो उस समय आत्मा का अनुभव हुआ। बाबा ने मुझे उसका अनुभव कराया। उस समय आत्मा स्थिति का और आत्मा के सारे गुणों का अनुभव हुआ। So where I was sitting, some people were walking down. I was at the beach, and some people were walking down the beach, and I felt this belonging, and I wanted to hug everyone. I felt belonging to nature, to the tree, to everything. It was such a deep, deep experience of soul consciousness. उस समय बीच पर बहुत लोग चल रहे थे, तो सबको देखते हुए अपनापन महसूस हो रहा था और सबको गले लगाने का मन लग रहा था। इवन प्रकृति को, हर एक व्यक्ति को गले लगाने को लग रहा था, लेकिन उस समय आत्मिक स्थिति का बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। And then Baba filled my heart with so much love that I couldn't stop crying. उस समय बाबा ने मुझे बहुत प्यार भर दिया अपने अंदर। And then
after that day, I decided to visit the center and I understand what happened to me. उस दिन मैंने सोचा कि मुझे सेंटर जाना चाहिए करके और फिर जानना चाहती थी मेरे साथ क्या हो रहा है करके. Yeah. And so from that time, I started to be a little bit more regular to the center, trying to understand more the Muli. And also here, Baba helped me a lot because at that time, the Muli was only given in class. So I was trying to understand from what they were saying. Someone was translating to me. It was said in Hindi, and someone was translating to me in English. So it was a little bit fragmented at the beginning for me. उस समय से मैं सेंटर के लिए रेगुलर हुई, तो फिर उसके बाद मुरली समझने का कोशिश कर रही थी. तो बाबा मुझे बहुत मदद किया और सेंटर में मुरली हिंदी में चलता था और फिर ऐसे घर में तो नहीं दिया जाता था, तो फिर कोई मुझे ट्रांसलेट करते थे. इंग्लिश हिंदी में चलता था और इंग्लिश में मुझे ट्रांसलेट कोई करते थे, लेकिन उसमें मुझे बहुत लगता था कि उसमें कुछ रह जाता है या फिर मैं पूरा नहीं ले पा रही हूँ करके. But Baba found his way into my heart, and the love for Baba, love for the Muli, the love for knowledge gradually grows day by day. तो बाबा ने जैसे मेरे दिल का रास्ता जान लिया, तो उन्होंने फिर जैसे सुनते गए तो बाबा के प्रति और मुरली के प्रति प्यार बढ़ता गया. Yeah, so thank you, Baba, for all your help. And then, actually, I was also helping in service here and there when I would have time. So not very regular in service, but I was a helping hand from time to time, yes. बाबा ने जो भी मुझे पहचाना उसके लिए बहुत थैंक्स. मैं बीच-बीच में सेवा में मदद करती थी. उस समय उतना नहीं, लेकिन बीच-बीच में सेवा में मदद करती थी. And I remember the last time we had Baba's meeting and we used to go on the stage, because after that, I cannot remember which year it was. And at this time, when I went on the stage and just to take a drishti from Baba, I saw two jewels from Baba's eyes. And it just entered deep inside me. The drishti just went deep inside my mind. जैसे मैं बाबा से दृष्टि लेने के लिए स्टेज पे गई थी, वो कौन सा साल है याद नहीं है, लेकिन जैसे ही आंखों में देखी तो फिर उस समय दृष्टि जो है जैसे मुझे मेरे गहराई में वो चला गया. And I remember when I came back, I said, now Baba, I have to serve regularly. So it was a beginning for me of serving regularly. जैसा ही वो दृष्टि का अनुभव हुआ, तो उस समय मैंने कहा बाबा अभी मुझे सेवा करनी है रेगुलरली. And so here we are. Oman is a beautiful country where souls are already very spiritually inclined. तो इधर ओमानीज जो है वो बहुत ही अच्छे आत्माएं हैं और फिर ऑलरेडी उनके अंदर वो आध्यात्मिकता है. So they are loving and very respectful, very polite, and it has been a joy to share with them some of the knowledge and to have different program with them. वैसे वो बहुत
प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे के प्रति बहुत रेस्पेक्ट रहते हैं, नम्रता है उनके अंदर, तो उस हिसाब से उनकी सेवाएं करते रहते हैं। Yeah. And so there is, of course, apart from the classes and courses and different program we have done at the center, there was a program for youth called CCBs that was initiated, hosted by the center, initiated by Sister Gayatri, and actually facilitated by two sisters, Gopi Ben and Judy Ben, Gopi from London and Judy from Canada. जो रेगुलरली सेंटर में कोर्सेस और क्लासेस चलता है, उसके अलावा यूथ प्रोग्राम चलता है, उसका कोऑर्डिनेट करते हैं तो विशेष रीति से गोपी बहन जो लंदन में है और फिर जूडी बहन कनाडा से है, तो वो दोनों विशेष रीति से इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट करते हैं। So this program helped us to have connection with many youths in Oman, and youths actually are very active, especially in Oman. So इस प्रोग्राम द्वारा यहाँ के जो युवा वर्ग है उसके साथ कनेक्ट होने का एक मौका मिला है, क्योंकि इधर युवा वर्ग बहुत एक्टिव है। Yeah. So the program consists of leading youth to start leadership from inside out. इस प्रोग्राम द्वारा जो उनके अंदर जो नेतृत्वता का गुण है, लीडरशिप का गुण है, उसको वृद्धि करने का एक प्रोग्राम है। Yeah. And so we have forged many beautiful connections with these youth. They have even cooperated in many of our programs in Muscat in Oman. And it has been now maybe more than 4 years, a little bit more, maybe 5 years now we are going on this program. इस प्रोग्राम के दौरान बहुत लोगों के संपर्क में आना हुआ, तो वो सभी भी बहुत सहयोगी रहे हुए हैं। लगभग 4 साल नहीं, 5 साल से भी ज्यादा ये प्रोग्राम चल रहा है। Yeah. And also we give some meditation to those who are healing from addiction. So it also since 4 years maybe, so on a weekly basis, because they have a program for healing from addiction. So in the program they have meditation, so also we participate in that. वैसे मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ, यहाँ पर के लोगों को अरबिक भाषा में चाहते हैं क्लासेस, तो उस हिसाब से सुरैया बहन अरबिक क्लासेस कराते हैं। तो उसके इसमें जो यहाँ पर ड्रग एडिक्शन का जो ऑर्गेनाइजेशन है, ड्रग एडिक्शन का, तो वहाँ पर भी जाके उनको मेडिटेशन क्लासेस कराते हैं। ये सेवा के लिए भी वो निमित्त है। वहाँ पर लगभग 4 साल से जा रहे हैं, 15 दिन में एक बार जाके उनको क्लासेस करा के आते हैं। Yeah, so that's all about what I can say. But if any question, maybe I will be able to say more. तो कहते हैं इतना ही कहने का है। जो भी कुछ क्वेश्चंस है आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप ही क्वेश्चन करें गायत्री बहन, आपको उनके रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास ही होंगे ज्यादा, लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा, जब ज्ञान नहीं मिला था तो क्या उस वक्त आप वेजिटेरियन थे या आप बाद में वेजिटेरियन बने? Sister Soraya, the question is like about
Before coming to knowledge, you were non-vegetarian or vegetarian? Haha. Yes, I have been vegetarian before knowledge. Actually, it's like the soul was also preparing itself because I was searching for purity and I changed my diet maybe 2-3 years before coming to knowledge. I was changing my diet into vegetarian diet. Yeah. ज्ञान में आने से पहले 2-3 साल पहले ऐसे ही मैं वेजिटेरियन रही, तो उस समय से ही जैसे आत्मा तैयार हो रही थी, तो मुझे उस समय से ही पवित्रता के बारे में भी बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैं 2-3 साल पहले से ही वेजिटेरियन थी. Okay, so right now, what kind of special efforts you are doing? Because now it's a time to return journey. So what special efforts you are doing? Yeah. Purusharth. In Hindi, we call it Purusharth. Purusharth, yeah. Yes, every day I remind myself that it's a return journey, first of all. Exactly. 1 minute, there is something, yeah. So every day I remind myself. And I think this, because for these 5 late months, I stayed at home. And because of the corona situation. And it was for me a very much appropriate time to be more with Baba. So I have started since 5 months to wake up at 3 o'clock. Before I used to wake up 3:30. So now I'm started 3 o'clock. And till 8 o'clock, I am just with Baba. So meditation, reading Murli, revising some virtues, reflecting on something, translating also in Arabic the Murli. So all of this time I spend it with Baba. So this is the effort I have done since 5 months ago. Yeah, I started that. So And I felt it's brought benefits, a lot of benefit. समय अनुसार यही पुरुषार्थ रहता है कि ये समय है बाबा के साथ रहने का. वैसे घर पे ही बैठे हैं तो फिर लगता है ये समय सारा बाबा के साथ ही रहना है करके. लगभग मैं 5 महीने से 3 बजे ही उठती हूँ. पहले 3:30 बजे उठती थी, लेकिन अभी 3 बजे ही उठती हूँ. तो योग और मुरली पढ़ना और उसके बाद मुरली ट्रांसलेशन करना, अरेबिक लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करते हैं. तो ये लगभग 8 बजे तक मैं जैसे कि बाबा के साथ ही समय बिताती हूँ. तो ऐसे 5 महीने से मेरा पुरुषार्थ चल रहा है. Okay, great. So, sister, this is the month of August, and if we are talking about August, means it's a month of Dadi Prakashmani. So, will you please share your experiences with Dadi Prakashmani, or if not, then any other Dadi like Dadi Janki? Unfortunately, I never met Dadi Prakashmani because the first time I went to meet Baba, Dadi Prakashmani left the body just before. Oh. So I couldn't meet her. And I went before for Peace of Mind and other program, but I didn't see Dadi Prakashmani at that time. Okay. So unfortunately, there is no personal experience with her. But for me, she's quite an example because now we have many books. We can read any book, so we can feel the vibration even in the books. So I have many small booklet of what Dadi Prakashmani said, and so I also read them morning and I revise them and I try to practice them. Yeah. Okay. वैसे कभी भी मैंने प्रकाशमणि दादी से पर्सनली मिलना नहीं हुआ. मैं जब पहली बार बाबा मिलन के लिए गई तब उसी साल दादी ने शरीर छोड़ा था.
उससे पहले भी मैंने पीस ऑफ माइंड रिट्रीट उसके लिए सब मैं गई थी, लेकिन उस समय ऐसे दादी प्रकाश मणि को पर्सनली मिलना नहीं हुआ। लेकिन दादी के बारे में जो भी किताबें हैं उनके बारे में बातें हैं, वो सभी जब पढ़ते हैं तो फिर होता है कि उनकी जो पालना है, शक्ति है, उसकी महसूसता होती है। तो उस हिसाब से मैं उनका फीलिंग्स महसूस करती हूँ। Okay, so but Sister Soraya, please let me draw your attention. Please don't mind. This is not your unfortunate. You use the word unfortunate, but I don't believe this is your unfortunate. But this is drama. So as per drama, you haven't made Dadi Prakashmani. Okay, so this is not unfortunate. It's not unfortunate, but it's not in my fortune, we can say. No, not like that. Not like that. Yeah. We should use word like that. This is as per drama. Okay. Yes, Because as per if you will, drama. because Yeah. if you will word use like if you will use word like that, this is not in my fortune, then it will decrease your excitement. Okay. Yes, Uh, yes. he has or she has the fortune like that, and I don't have this fortunate. It's No, you true. have Totally great true. fortune. Okay. Sorry, please don't Yes. mind, but you are Yeah. fortunate soul. Okay. Of Okay, course, let me of ask one course. more question. You have seen many countries, you have moved here and there. So, is there any place like Madhuban in the world? No, Why? not at all. I have to mention that before going to Madhuban the first time, I dreamt about it. Okay. I saw it in my dream. And when I reached there, I said, wow, this is my dream. Okay. I saw everything in detail. And so, yeah, I mean, for me, going to Madhuban is going home, is going, I cannot describe it, but it's such a feeling every time I go there, such a joy. No, there is no place. Yeah. गायत्री बहन पहली बार मधुबन जाने के पहले ही मैं वो सारा दृश्य देखा था। वैसे मधुबन गए तो लगा मैं अपने घर गई, ऐसे वो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती। मधुबन जैसा और कोई स्थान तो है ही नहीं। Okay. So particularly in Madhuban, particularly what attract you the most? That's what attracts me the most in Madhuban. Everything. Actually, for me, the first thing that attracted me into this knowledge, it was the family. I felt Okay. the belonging. Mm-hmm. That was the first attraction, the love of the family and the belonging to the family. And I could say in my mind, this is my family. Great. And in Madhuban, I cannot say something special. I think it's a whole, at a whole. Nothing in particular. Okay, great. Yeah, परिवार और everything. परिवार का प्यार बहुत मुझे अच्छा लगा। मधुबन में ऐसा नहीं है, लेकिन पूरा मधुबन ही मुझे आकर्षण किया। विशेष रीति से परिवार का प्यार वो मुझे खींचा। Okay. Now I would like to introduce Dr. Jain Bhai. Om Shanti. So Dr. Jain Bhai and our respected Champa Ben are Yugal, and there is only one center here in Gujarat which is run by Yugal. So Dr. Jain Bhai was permitted by Sakar Brahma Baba for their holy marriage. Okay. So as per the Srimad of Sakar Brahma Baba, they got married and they are running center here at Vadodara. Wow. Okay. And Dr. Sahib. Yeah. And Baba speak about you in the Murli, so Baba mentioned many times praising the Yugal. Yeah. बहुत अच्छा इस लगा। समय में विशेष और एक बात इस आत्मा के प्रति मैं कहना चाहती हूँ।
वो नहीं बता रही है, लेकिन मैं उनके बारे में बताना चाहती हूँ। वैसे सोरैया बहन जो है यहाँ का जो लोकल्स की सेवा है उसके लिए निमित्त है, क्योंकि विशेष रीति से उन लोगों तक पहुंचना है तो उनकी भाषा बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इंग्लिश आता है तो भी वो इंग्लिश इतना प्रिफर नहीं करते हैं। तो उनकी भाषा में बात करना और उनके लिए जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल रीति से कम्युनिकेशन करना होता है वो सब अरबिक में लेटर्स लिखना होता है। तो उसके लिए वो सारा निमित्त है, क्योंकि वो इंग्लिश में से ज्यादा अरबिक में करना चाहते हैं। उस समय हमको नहीं तो ट्रांसलेशन कराना पड़ेगा बाहर वालों से, तो फिर वो हमारी भाषा या हमारे भाव को नहीं समझेंगे। लेकिन जो ज्ञान को समझते हैं तो वो आसानी से हमारी भाव को लिख सकते हैं। तो फिर उस हिसाब से बाबा की जो भी सेवाएं यहाँ पर कम्युनिकेशंस का होता है तो वो निमित्त है। और यहाँ के जो भी लोकल्स हैं उन सब के लिए अरबिक में कोर्सेस कराते हैं, क्लासेस कराते हैं। और यहाँ के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पर भी विशेष बच्चों को और वहाँ के टीचर्स को अरबिक में क्लास कराते हैं, क्योंकि बच्चों को इंग्लिश इधर इतना नहीं आता है तो अरबिक में ही चाहिए होता है। तो फिर वो सब सेवा के लिए भी निमित्त है। और जो भी यहाँ पर प्रोग्राम्स चलता है, बड़े आते हैं, तो वो सब तो इंग्लिश में ही सुनाएंगे, लेकिन उन सब का ट्रांसलेशन जो है फिर अरबिक में ये करते हैं। तो ऐसे सेवाओं के लिए ये निमित्त है। तो अरबिक में वैसे बहुत कुछ ऐसा लिटरेचर वगैरह तो नहीं है, लेकिन जो भी बातें क्योंकि पालना देनी होती है तो फिर विस्तार में उनको सब बातें बतानी होती है। तो उस सब बातों को फिर अरबिक में ट्रांसलेट करते हैं और फिर उनको समझाते हैं और फिर रोज उन सबको फिर अरबिक में वरदान या जो भी मुरली का सार है, क्योंकि पूरी मुरली तो वैसे उनको सुना नहीं सकते हैं, तो उसको सिंपल रीति से बाबा के शब्दों को उस भाषा में परिवर्तन करके फिर उन सबको रोज भेजते रहते हैं। तो ऐसे सब सेवाओं को वो निमित्त है। और विशेष यहाँ पर मस्कत में एक तो यूथ प्रोग्राम जो है हम उस हिसाब से बहुत बड़े रीति से कर रहे हैं, लोकल्स को इन्वॉल्व करके। और दूसरी बात जो है हर साल यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाते हैं, जो अक्टूबर 2 को होता है। वैसे वो गांधी जयंती है, लेकिन यूएन ने उसको यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रीति से डिक्लेयर किया है। तो ये हर साल हम बड़े लेवल से करते हैं। यहाँ के जो इंडियन एम्बेसी है उसके साथ मिलकर करते हैं। तो उस प्रोग्राम के दौरान यहाँ के कोई भी लोकल मिनिस्टर्स होते हैं वो रहते हैं, और विशेष रीति से सब कंट्रीज के एम्बेसडर्स भी ज्वाइन होते हैं। लगभग मैक्सिमम लास्ट टाइम तो 20 कंट्रीज के एम्बेसडर्स आए हुए थे। और फिर यहाँ के सोशल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उसके साथ लोकल डिग्निटरीज भी बहुत थे। 2 years बिफोर शिवानी बहन आए थे, तो फिर यहाँ पर ऐसे बहुत बड़े रीति से भी सेवा हुई। तो इतने बड़ा गैदरिंग या ऐसे बड़ा डिग्निटरीज इकट्ठा होना एक बड़ी बात है। वैसे मैं समझती हूँ ऐसे कहीं नहीं चलता होगा। तो फिर उस हिसाब से यहाँ पर हर साल ऐसे बड़े रीति से प्रोग्राम होता है। तो उस समय जो भी लोकल वीआईपीस होते हैं उनकी सेवा है, उनके साथ बात करना, तो ये सब के लिए फिर ये विशेष रीति से निमित्त भी है।
तो ऐसे यहाँ के भाषा के अनुसार सेवाएं वो देते रहते हैं। सोरैया बेन, Om Shanti, brother. आप के साथ और कौन कौन रहते हैं? वैसे वो घर पे ही रहते हैं, लेकिन आते जाते रहते हैं और सेवा करते रहते। What is the question? So sorry, he is asking about who else stays with you. Who else? Who else stays with you? What are there along with you? Lives with me. Yeah. Yes. I live with one daughter now. Only one daughter. वो अपने एक बेटी के साथ रहते हैं। अच्छा। Arabian language is her own? Yeah. Yeah, I mean, for Original me, language. yeah. Which is the original language of Soraya Ben? Original language, the first language is French, because mother French, and I was born there. And then I moved to Syria after, when I was in my 15. So Arabic was my second language. And yeah, and English later on, I learned English. First is French, yeah. We are very happy to meet you, see you, Thank and you. enjoy us. Enjoyed us. It was my dream to visit centers in India, but I couldn't do it because when I go to Madhuban, I go only for 1 week. But here with Zoom, we are able to travel and to be in another center and to visit other center in India. So that's beautiful. So you do come to Baroda also in India. Yes, if Baroda is in Gujarat of India. Okay, yeah. Okay. Maybe next time I have to plan for that. Yeah. Acha. May nahi do. May do. Do. Not may. So he's Do asking come. about surety. He's asking about surety. You have to come. You have to come. I will try like that. Yeah, yes. I will come. For sure. If it's in the drama. Whenever you visit Madhuban. According to drama, I will come. Yeah. Okay. No. You come, it will be in drama. Yes, definitely. That's true. Yes. Okay. It will happen. Yeah. चलो भाई और बहनों को किसी को कुछ कहना है भाई? अशोक भाई को कहना है, अनम्यूट कीजिए अशोक भाई को। अशोक भाई एक वक्ता है, बाकी सभा में सब श्रोता है। So you are in different centers or the No, same center. Majority are from same center, but one is from Canada. Our Narsi Dada is from Canada. One person, one soul is from Kolkata. But we may use the word same center, like okay. Okay. Because Okay. they From the got same town. from Vadodara, and they have been shifted to Canada, Kolkata, or etc. Like so, it's a one center. Yeah, Okay. yeah. Ashok bhai bolo. Sister Sroha, Om Shanti. Om Shanti. Acha, you had a very long journey in this spiritual knowledge, and you have put lot of efforts to become a Karmatit. Based on this efforts, I would like to ask one question. In Satyug, in Golden Age, what would you like to become? You would like to become a Lakshmi or Narayan? Interesting question. I need time to think about it. I mean, I don't mind whatever body.
let me go first to the golden age. I don't know. I never thought about it. Marriage pakka in the golden Yeah. Baba was saying yesterday, I think he was saying there's no difference in the bodies of men and women. It's only the drishti that is different. In Hindi, we So say as it a nain Lakshmi, aur as a chain. Narayan. In Hindi, we said it नैन और चैन का अंतर. हिंदी में ये कहा जाता है नैन और चैन का अंतर होता है. ठीक है, बहुत अच्छी बात. देखो भाई और बहनों, विदेशियों ने भी इन बातों को कैसे अच्छे से ज्ञान की बातों को गहराई से समझा है, पकड़ा है. ये इस जवाब से समझ में आता है कि वो बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं है. इट डजंट मैटर व्हाट जेंडर आई विल गेट इन गोल्डन एज. सो ग्रेट आंसर बाय सिस्टर. ओके, और किसी को कुछ कहना है भाई कि पूरा करे? हाँ बोलो. Overall, the experience is given by the sister is very nice at this stage. His sound is very mild and very strong. That we are listening very clear in English, Thank very clear and neat. Nicely, he has. And along with sister, Gayatri Ban is a very, I think very difficult to express the way she has translated, like a very Professional. child. Just gave the glimpse of it. That's it. Not like one translation. Translation is, so far we have already observed earlier also, but today it was entirely different from others. And it has been very nice as a one child is speaking, very small child, and very continuously making to understand us. Thank you very much. Now, sister, we will meditate for 2 minutes and then we will finish the meeting. Okay? Okay. Once again, thank you. And Thank you. Thank you all. Thank you so much. Thank you to both of you. Okay. Thank you you. to speaker and thank you to translator. Okay. Thank you. Thank you, No, brother. thank It was a for the pleasure family. to meet you all. Okay. जब आपने चांस दिया तो थैंक यू. फिर से मिलने के लिए बहुत खुशी हुई. चलिए, ओम शांति. 2 मिनट बाबा Om की Shanti. Thank you so much. Thank you. I love you, my brother, we're no different. One family, one God. I love you, my sister.